Hello students, let's continue the story from the point where we left in the previous lecture. We had reached to the point that William Douglas had started going down again in the water. He was going down again and now he was completely terrified. This is the point where we have to start from. And then sheer stark terror seized me. sheer एंड स्टार्क मीन्स दोनों का मतलब होता है घोर, अत्यधिक, अत्यंत भय जिसकी कोई लिमिट ना हो। दोनों वर्ड एक साथ इसलिए रखे गए हैं सो दैट मैग्नीट्यूड बढ़ाया जा सके उस भय का, उस डर का। मीन्स बहुत ज़्यादा डर, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा डर। सीज्ड मी, क्लच्ड मी, ग्रैब्ड मी। राइटर कह रहा है कि मुझे डर ने बिल्कुल जकड़ लिया, अत्यधिक डर ने। एंड यू नो वाई? बिकॉज ही वॉज गोइंग डाउन द सेकेंड टाइम। द फर्स्ट टाइम ही हैड ट्राइड बट ही कुड नॉट गेट आउट ऑफ द वाटर। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, एक ऐसा टेरर जो किसी समझ को नहीं जानता। मीन्स इफ़ यू आर टेरिफाइड यू कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, ऐसा डर जिस पर कोई कंट्रोल ना हो। When someone is so much terrified that his mind stops working, then we can say this terror does not know any understanding, this terror does not have any control. Terror that no one can understand who has not experienced it. So at that time the writer was experiencing that terror which only one is which can be अंडरस्टूड बाय दैट पर्सन हु हैज़ एक्सपीरियंसड द सेम। जिसने ऐसे ही डर को अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया है ना, वही समझ सकता है उस डर को। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, ही वॉज शाउटिंग अंडर वाटर, आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, स्टिफ, रिजिड विद फियर, अकड़ा हुआ फियर से। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, it is exaggeration that his screams were also frozen. He is saying that he could not raise an alarm. पानी के अंदर अगर कोई बोलेगा भी तो बाहर सुनाई नहीं देगा। That's why he is saying his screams were also frozen. Only my heart and the pounding in my head, pounding means beating, in my head said that I was still alive. So there were some signals. His heart and his head were pounding. So he could say that he could understand that he was still alive. He had not died. Why is he saying this? Because he does not know how to die. जब इंसान मरता है तो कैसा फील करता है? हो सकता है मरने के बाद भी ऐसा ही लगे कि जीवित हूँ। सो हार्ट और हेड में पाउंडिंग हो रही थी, उसको लग रहा था कि दैट आई वॉज स्टिल अलाइव। एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ टेरर, इन द मिडस्ट ऑफ टेरर, टेरर के बीच में, केम अ टच ऑफ रीजन, केम अ टच ऑफ लॉजिक। एंड वट वॉज दैट? आई मस्ट रिमेंबर टू जंप when I hit the bottom. So this was his plan, that he had to hit the bottom. He had to jump when he hit the bottom. So the same strategy he remembered. At last, I felt the tiles under me. He had reached to the bottom. My toes reached out as if to grab them. So he was desperate to reach to the bottom. सो उसके जो अंगूठे थे वो आगे की तरफ बढ़े सो दैट जल्दी से वो बॉटम को टच कर ले। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड। एवरीथिंग मीन्स विच एवर वट एवर स्ट्रेंथ ही हैड, जितनी भी उसके पास स्ट्रेंथ थी, जो ताकत बची हुई थी, ही यूज्ड दैट स्ट्रेंथ एंड जम्प्ड अपवर्ड्स। बट द जंप मेड नो डिफरेंस।
The water was still around me. I looked for ropes, ladders, water wings. He searched for all these things: ropes, ladders, wings, anything if he could get. We say that डूबते हुए को तिनके का सहारा ही काफ़ी है. So he was searching for that things, those things which could save him. Nothing but water, but there was nothing, just water was there. A mass of yellow water held me. Water was holding him. It can be said that here we have personification. पानी ने उसको पकड़ा हुआ था. He is personifying water here. Stark terror took an even deeper hold on me. So अभी तक तो वो डरा हुआ था, और भी ज़्यादा डर गया. When he found that his jump had made no difference, like a great charge of electricity. So now he felt like he was going to die, and his efforts had borne no fruit. So he was desperate. He was so desperate that it was like he had been electrocuted. I shook and trembled with fright. Fright means fear. Arms wouldn't move. My legs wouldn't move. I tried to call for help, to call for mother, but nothing happened. He couldn't do anything. Neither he could use his legs and hands, his arms, neither he could call his mother for help. He could call no one to help him. And then, strangely, there was light. I was coming out of the awful yellow water. Why is this water awful now? Because it had been very, very dangerous for him now. That's why he has addressed the water as awful, terrible. At least his eyes were out of water. The jump really made difference, but not too much. He came up slowly, and his eyes only were out of water. My nose was almost out too. His nose was also out. Then I started down a third time. So only nose came out, but not mouth. And you know then that if you are not able to breathe for a long time, you must use your mouth to suck a lot of air. So I sucked for air and got water. Why did he get water? Because he might have sucked air through his mouth, not through his nose. But mouth was underwater, so he would definitely get water. The yellowish light was going out. Then all efforts ceased. Ceased means stopped. I relaxed. Even my legs felt limp. Limp means handicapped. And the blackness swept over my brain. अंधेरा छा गया उसके दिमाग पर. You know why? Due to lack of oxygen, his mind was stopping to work. It has started the process of working, stopping work. It wiped out fear. When you don't have any control over your mind, you can't understand anything. Whether it is a condition of fear, it is a condition of happiness. हमारे सेंस जो होते हैं वही तो हमें बताते हैं कि भाई ये खुशी की बात है या दुख की बात है. When you are not able to understand anything, then there is no need to fear. When you are getting unconscious, there is no need to be panic. It wiped out terror. There was no more panic. It was quiet.
and peaceful. Everything was quiet and peaceful. So he tried twice to get out of water. Twice he jumped. Nothing to be afraid of. This is nice. This is nice to be drowsy. Drowsy means to be sleepy. To go to sleep. This is nice. No need to jump. No need to jump. आराम करना अच्छा है. Too tired to jump. He had been so much tired that he could not jump now. It's nice to be carried gently. It was like he was being carried gently. So he was saying, it is nice. पानी में वो धीरे धीरे नीचे जा रहा था, आराम से जा रहा था. So it was very very comfortable for him now. You must say, how can it be comfortable when he was drowning in water? Twice he had tried, and now he had lost his breath. He was getting unconscious. थोड़ी बहुत जो समझ थी, थोड़ी बहुत जो अंडरस्टैंडिंग थी, वो ये कह रही थी कि अब कुछ नहीं है, अब सब आराम है. तो he was trying to get at peace, to float along the space. Tender arms around me. He felt like he was in tender arms. Means tender arms were holding him. Tender arms like mothers. Tender means soft. Now I must go to sleep. He was feeling that he was in his mother's lap. His mother was carrying him gently, like a baby is carried by its mother. I crossed to oblivion. There is a limit of understanding. When you cross to oblivion, it means you have lost your sense. You have lost your understanding power. You have no control over your mind. Like you are when you are unconscious. याद का सारा कुछ मिट जाना, सब कुछ भूल जाना. And the curtain of life fell. The next I remember, I was lying on my stomach. He was lying on his stomach means he was वो पेट के बल लेटा हुआ था. Beside the pool. Beside means बगल में. Vomiting. He was vomiting. The chap, the boy that threw me in was saying, someone had asked the boy, why did you throw that child into the pool? और वो कह रहा था, he was explaining, but I was only fooling. He was giving this explanation कि भाई मैं तो मजाक कर रहा था. I was just making fun. Someone said, the kid nearly died. Be all right now. Let's carry him to the locker room. So जिसने भी राइटर को निकाला है वो ये कह रहा है कि भाई तू तो मजाक कर रहा था, लेकिन ये तो लगभग मर ही गया था. चलो, बी एट पीस नाउ. इसे लोकर रूम में लेके चलते हैं. Several hours later, I walked home. I was weak and trembling. Trembling means shaking, shivering, काँप रहा था. I shook and cried when I lay on my bed. I couldn't eat that night. So the writer is explaining his fear. वो जो डर था उसका असर अभी उसके माइंड पर है. वो अपने बिस्तर पर सो नहीं पाया, वो खा भी नहीं पाया उस दिन. एंड इट वॉज ड्यू टू ही आई थिंक डिडंट शेयर इट विद हिज मदर. जब आप किसी प्रॉब्लम में होते हैं और कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है जो आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है, आपको बहुत ही सता रही है, सो ऐसी कंडीशन में आपको अपने किसी बड़े को बता देना चाहिए. डेफिनेटली यू विल गेट रिलीफ. पहली बात तो ये कि जब आप अपने दुख को शेयर करते हो किसी के साथ, डेफिनेटली इट इज़ लेस. ये पहले से कम हो जाता है, आपका मन हल्का हो जाता है. और अगर वो आपसे बड़ा है और आपका अपना है, आपसे प्यार करने वाला है, तो डेफिनेटली ही विल गिव यू लॉट्स ऑफ एडवाइस. आप बहुत अच्छा फील करोगे तो बता देना चाहिए. तो वो नहीं सो पाया, तो मुझे आई थिंक दैट ही डिडंट शेयर इट विद हिज मदर. एंड यू नो वाई. उसको लग रहा था कि मदर गुस्सा करेगी. मदर तो बार बार मना करती थी ना
पानी से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी न करने से। दैट्स वाई शी केप्ट टेलिंग हिम नॉट टू गो टू याकिमा रिवर, नॉट टू गो नियर याकिमा रिवर। सो स्विमिंग पूल के पास जाने से भी शायद मना किया होगा उसने। और मैं यहाँ पर ये मानता हूँ कि अगर बच्चे अपने डर की बातें, अपनी दुख की बातें, अपने शंका की बातें अपने बड़ों से शेयर नहीं करते हैं, तो इसका एक सबसे बड़ा रीज़न यही है कि उनको ये डर लगता है कि अगर हम बताएंगे तो हमें डांट पड़ेगी, सलाह मिलने के बजाय हमारी पिटाई होगी और डांट पड़ेगी। तो ऐसा बड़ों को भी करना चाहिए। जब बच्चे बताते हैं तो उनकी उन बातों को सुन करके सल्यूशन देना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे कि उनको डांटेंगे तो आगे से वो बताना ही बंद कर देंगे। तो सोल्यूशन मिलेगा कैसे? तो वो गलत जगह से सोल्यूशंस मिलेंगे, तो डेफिनेटली दे विल गो ऑन अ रॉन्ग ट्रैक। सो ही couldn't sleep that night. For days a haunting fear was in my heart. Haunting fear is that fear which doesn't leave you. हमेशा आपको सताए, भयभीत कर देने वाला, डराने वाला, ऐसा डर जैसे भूत डराता है। सो वो डर उसके साथ ही बना रहा उसके दिल में। द स्लाइटेस्ट एक्सर्सन, स्लाइटेस्ट मीन्स थोड़ा सा भी फिजिकल एफर्ट, थोड़ी सी भी मेहनत, अपसेट मी, मुझे हिला देती। मेकिंग मी वबली, वबली मीन्स वीक इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक। तो उसको बड़ी कमज़ोरी फील होती है अगर वो थोड़ी सी भी मेहनत कर लेता। मेहनत का मतलब थोड़ा ज़्यादा चल लेता, सीढ़ियाँ चल लेता, कुछ इस तरह की भी अगर वो एक्टिविटीज़ करता तो उसको ऐसा लगता है कि वो अंदर से फिट नहीं है, बहुत ही वीकनेस आई हुई है उसके अंदर। एंड देर वर टू रीजन्स, देर वर टू रीजन्स फॉर दैट। वन, मेंटल इलनेस, साइकोलॉजिकल इलनेस, एंड सेकेंड, ही वॉज रियली अफेक्टेड बाय दिस बॉडीली। वो बॉडी पे भी असर हुआ था उस एक्टिविटी का, उसके डूबने की वाली घटना का, माइंड पर ज़्यादा हुआ था। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, आई feared water, I avoided it whenever I could. So after this incident, राइटर पानी के पास भी जाना बंद कर गया। वो कभी भी नहीं जाता था किसी भी पानी से रिलेटेड जगह पर। और it was because he was completely suffering from hydrophobia now. So I think it is enough for today. Till this point we have read, and we will start from this point tomorrow. And I hope you have understood everything that we read today. So let's meet tomorrow. Okay, my dear students, take care. Bye.